Good morning, sir. Good morning, ma'am. I'm just waiting for the students to join. We are waiting for others to join, so maybe we'll start in another minute. Arun, please switch on your camera. Arun, switch on your camera. Okay. So, Arun, keep the camera on, beta. On off mat kariye. Just keep it on. We'll get started. Okay. So, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है. सो in the last class we started with the wave optics revision and we discussed the Huygens principle कि Huygens principle किस तरह होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और उससे हम किस तरीके से वेव नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. तो now the question is, this is a pure derivation, it is in the book also, so we will not do all the derivations, but ये एक करके देखते हैं कि हाइजेंस प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है. Everyone, switch on your camera. Please switch on your cameras. Arun. मेरा ऑन है. हाँ, मानसी बस आप ही का ऑन हुआ है, अभी बीच में वो भी बंद हो गया. Arun and Dipanshi, please switch on your cameras. Okay, so now let's move on. Arun and Dipanshi, please switch on your cameras, beta.
Arun and Dipanshi, what's the problem? Switch on your cameras. ओके, तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ क्या होता है? व्हाट डज द स्नेल लॉ से? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? प्रियांक, अरुण, दीपांशी, आप सबका वीडियो ऑफ है, स्विच इट ऑन। प्रियंका, Arun and Dipanshi ka bhi, Arun has switched it on now. Better keep it on, don't switch it off now. Okay, now तो Snell's law बताइए कोई, that is a class, I think class 8th we had learned it, class 8th or 9th. तो Snell's law क्या कहता है? What does the Snell's law say? Nobody knows that. Sin I by sin R is equal to a constant. And what is that constant? That is the refractive index of the second medium with respect to the first medium. Okay, which is equal to the speed of light. Okay, let me just write it as V. Speed of light in the first medium by the speed of light in the second medium. Okay, this is Snell's law. So we have to establish this using the Huygens principle. तो देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल वाले जो भी हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसका एक सेट पैटर्न होता है। हम क्या करते हैं उसमें, हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट है यहाँ पे। ओके, तो नाउ दे आर इंसिडेंट एट एन एंगल I, and after refraction they are going at an angle of R, which is the angle of refraction. Fine, we know that. Now what we do is we drop a perpendicular at the point of from the point of refraction onto the other ray. ठीक है, तो पैरेलल रेज हैं, कहीं से आ रही हैं, तो ये इस समय जो है एक पैरेलल वेव फ्रंट है इनका. So this is a wave front, right? This entire thing is a wave front. Now, what do? We say that this is the path difference for this light ray. This has reached the medium 2 and this is yet to reach the medium 2. Okay, let's say it will take a time tau to reach from here to here. Then what would this distance be? If the speed of light in medium 1, this is medium 1, this is medium 2. If the speed of light is v1 in medium 1, then this distance is v1 tau, right? And in the same
time, in this much time, right? It will cover a distance of v2 tau here. Everyone Right? switch on your camera. बार बार बोलना पड़ रहा है आपसे. बेटे कैमरा हमें क्या ऑन पता रखिए. कैमरा ऑफ करके कहीं चले गए हो या क्लास ले रहे हो. सर प्लीज इन्हें रिमूव कर दीजिए जो क्लास में स्विच ऑफ करा हुआ है कैमरा. महावीर, जनेन्द्र, Arun, you are again and again switching off your camera. Dipanshi, you too. Mahavish, what happened to you today? Why your camera is off? Your camera is usually always on. Mahavish. सर मैं ऑन कर रही हूँ पर बता रही क्यों ऑन नहीं हो रहा आ रहा है. प्लीज ट्राई इट अगेन, प्लीज ट्राई इट अगेन आ रहा है बार बार. आप एक काम करो, आप ना रीजॉइन कर लो. कुछ टेक्निकल Okay, इश्यू sir. होगा. रीजॉइन, देन इट विल वर्क. प्रिंस पार्टी स्विच ऑन योर कैमरा. प्रिंस एंड इशिका सिंह. इशिका. आप जैसे भी बैठे हो स्विच ऑन योर कैमरा. ठीक है, पढ़ रहे हो ना आप लोग. मुझे दिखना चाहिए कि आप लोग बैठे हो सामने. ओके. सो ये v2 टाउ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट? और यहां से किस तरह का वेव फ्रंट बनेगा? हमेशा वेवलेट्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं. तो ऐसा एक स्फेरिकल वेवलेट बन गया है. राइट? नाउ यहां पे भी देर इज अ at this juncture, right? If we draw a tangent here to this, right? This is that tangent. Okay. Now, where this tangent meet is this line drawn, right? Because the propagation of light is perpendicular to the wavefront. Okay. So, now this angle is I, this angle is R. Then what is this angle? This angle is R. This angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. So this angle is 90 minus R. So this angle is R again. Okay, so this angle is R. Okay, now let's write our sin I. Sin I. What is sin I? Because this angle is I. With the same logic I told this, right? Now what is sin I? From here, tell me what is sin I? Let me just name these points so that you can tell me. Now tell me, what is sin I? Which side by what side? Perpendicular by hypotenuse. What is that? BC by hypotenuse? AC? AC. Right? And sin R is equal to AD by AC. Now it means sin I by sin R.
is equal to BC by AC into AC by AD, right? Which is BC by AD. Now, what is BC? BC is V1 tau and AD is V2 tau. So V1 by V2. Okay, which is the Snell's law. ठीक है, तो ये Snell's law हम prove कर सकते हैं using Huygens principle, but the information that we have to use in this, okay, the information that we have to use is that the speed of light is different in each medium. Okay, that is the only information we use, and we use the Huygens principle and we can prove this. Okay, similarly we can do it for reflection also. It's easy to do it because in this case what would happen, that both the velocities are same, right? And hence it's even a simpler case. Okay, so I will skip that. You can read that from the book. Now let's do some more questions. See, the objective is not to do the full chapter again. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि हम रिकॉल कर लें, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिकॉल हो जाएं सारे, ठीक है. एंड वी आल्सो सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस, सम रीजनिंग क्वेश्चंस एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, सो दैट आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेज R1, R2 और R3 will take the least amount of time to travel from A to B? इसमें से सबसे कम समय किस रे ऑफ लाइट को लग रहा है? We have R1, R2, R3. Which one will take the least amount of time? बताइए. बेटा सबके videos are off again. Why should we waste our time in this discussion, right? सभी का time waste हो रहा है ना इस तरह से तो. Please keep the videos on. Keep your videos on. Arun, Dipanshi, Ritik, Ishika, Kirti, Priyanka. Keep your videos on. बताइए कौन सी रेस में सबसे कम समय लेगी ए से बी तक जाने में? Sir, R2. Yeah, it looks like, right? It looks like that R2. But the correct answer is all will take the same time. Okay, all will take the same amount of time. Now that sounds a little difficult to happen, right? But obviously the others look longer. But see one thing, this one, although it looks pretty short, it is going through the longest distance through the glass. Okay, and these rays, although they travel for a longer distance in air, they travel a shorter distance in glass. Okay, in glass, the speed of light is substantially lower than that in air. So finally, when we calculate the time, right, we will find that all of this comes to the same amount. I mean, we will have to use a lot of geometry to do that calculation. Okay, that we don't have to do here. Okay, just remember that all of these rays will take the same amount of time to reach. Okay, this is a standard question that you should know the answer to.
Okay, you can geometrically prove it, but that will take a pretty long time. This will be, if such a question comes, it will be just for 1 mark. You will not be asked to prove it. Okay, all will take the same amount of time is the answer. Okay, so can dispersion be explained using Huygens principle? What is dispersion? Everybody remembers dispersion, right? This is dispersion. Can this be explained using Huygens principle? Give me a simple explanation, no proof. बेटा somebody has to answer, तभी तो रिवीजन होगा जब आप बात करेंगे. आंसर गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैन डिस्पर्शन भी हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके हम डिस्पर्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक्सप्लेन करना नहीं है, बस ये बताना है कर पाएंगे या नहीं. अब है, आप बताइए, आपको क्या लगता है? बेटा गलत आंसर की चिंता मत करिए, सीखेंगे गलत आंसर दे देकर ही. ये हमारी अपनी क्लास है, हम गलत आंसर दे सकते हैं, बोर्ड में नहीं देना है हमको गलत आंसर. क्या लगता है अरुण आपको? अब है, सॉरी, हम कर पाएंगे इसको एक्सप्लेन? हाँ, क्यों कर पाएंगे? व्हाई डू यू थिंक सोनाली वी कैन एक्सप्लेन दिस? सर क्योंकि हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी वो होती है इंसिडेंट वेव फ्रंट, उससे सेकेंडरी वेवलेट बनती है, इसलिए शायद. हाँ, तो इसका जो सिंपल आंसर ये है, व्हाट यू आर सेइंग इज पार्शली करेक्ट. हम हाइजेन प्रिंसिपल से अभी अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया 2 स्लाइड पहले? रिफ्रैक्शन किया. रिफ्रैक्शन का लॉ निकाला ना, स्नेल्स लॉ, राइट? और रिफ्रैक्शन अगर एक्सप्लेन कर दिया तो डिस्पर्शन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? कि अलग अलग वेवलेंथ्स की अलग अलग स्पीड होती है इन डिफरेंट मीडियम्स, और उसी से साइन आई बाय साइन आर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई तो सबका सेम है, एक एंगल पे इंसिडेंट है सारी रेज, सबका साइन आर बदल जाएगा क्योंकि उनकी वेलोसिटी अलग है, इसलिए वो अलग हो जाएंगे. तो ये तो हम रिफ्रैक्शन अगर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ये तो डायरेक्टली एक्सप्लेन हो जाता है. Since we can explain refraction using Huygens principle, we can also explain dispersion. Okay, they are direct consequence of each other. Okay, not each other, but dispersion is a direct consequence of refraction. If the source of light has a relative motion with the observer, there is a change in color observed. This effect is known as एक स्टार है यहाँ पे, वो तेजी से हमारी तरफ आ रहा है अर्थ की तरफ, तो अर्थ पे अगर कोई खड़ा है यहाँ पे तो ऊपर देख रहा है, उसको ये स्टार मान के चलिए, दिस स्टार इज येलो, he might see it of a slightly different color. Like he might see it slightly greenish. He might see it as slightly greenish. So what is this effect called? That the color changes because of relative motion. This is a simple question, one-liner question, straight from the book.
Again, all the videos have gone off. Switch on your videos and answer this very basic question. कि change in color of light or the apparent color of light because of relative motion between the source and the object observer is called? Which effect is it? So scattering. Doppler effect. ठीक है, आपने ये पहले उसमें भी एक्यूस्टिक्स में भी पढ़ा है डॉपलर इफेक्ट कि हमें पिच अलग सुनाई देती है साउंड की अगर देयर इज अ रिलेटिव मोशन. सो एक अप्रोचिंग ट्रेन की विसल हमें एक डिपार्टिंग ट्रेन की विसल से अलग सुनाई देती है, लेकिन होती वो सेम ही विसल है. ओके तो इट्स कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट. ये किसी भी वेव पे अप्लाई होता है, साउंड पे भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी पे, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे भी होता है. और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेव लॉन्जिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो. ठीक है, सो दिस इफेक्ट इज irrespective of the type of the wave. This is always true. Okay, this is a very important phenomenon. छोटा सा सेक्शन है बुक में बट इंपॉर्टेंट है, जरूर आना चाहिए डॉपलर इफेक्ट. What is the meaning of redshift? Again, this is related to the Doppler effect. Give the condition for the redshift. What is the opposite phenomenon called? Okay, redshift क्या होता है? ओके, डॉपलर इफेक्ट से ही रिलेटेड है. देखिए रेड शिफ्ट क्या होता है. अगर रिलेटिव मोशन ऐसा हो कि जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी हमें कम महसूस, ठीक है ना, और वो कब होगा जब द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑब्जर्वर है and the source of light. Let's say I'll put a bulb here. Okay, so it is moving in this direction. Then what happens is the person here sees a color which is towards the red in the whip gear. ठीक है ना, so frequency is increasing here. Everybody knows that, right? That the violet is higher frequency than the red. So Doppler effect में जब ऑब्जेक्ट और सोर्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा होता है तो क्या महसूस होता है कि कलर, अगर किसी को मान लीजिए एक ब्लू चीज है और वो हमसे तेजी से दूर जा रही है तो हमें लगेगा कि वो ब्लू की जगह ग्रीन है. Okay, and green is towards the red side of the spectrum. Blue से red की तरफ आए तब green आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं red shift. Okay, so you can read red shift as shift towards red. और इसका ऑपोजिट कब होगा? ऑपोजिट होगा जब जो सोर्स ऑफ लाइट है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है. और इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्वियसली ये साइड जो है वायलेट नहीं बोलते हैं हम, बस हम इसको ब्लू शिफ्ट बोल देते हैं. ओके, इट कुड हैव बीन अ वायलेट शिफ्ट बट द नेम गिवन इज ब्लू शिफ्ट. ओके, याद रखिए यहाँ पे तो रेड शिफ्ट है बट इधर ब्लू शिफ्ट बोलते हैं. इवन इफ इट इज बिकमिंग वायलेट फ्रॉम इंडिगो, ओके, वी विल स्टिल यूज द टर्म ब्लू शिफ्ट. मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने को ब्लू शिफ्ट कहते हैं.
अंडरस्टूड? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. बहुत छोटा सा है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आपको न्यूमेरिकल्स यूजुअली नहीं आते. इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पार्ट है बट वो यूजुअली नहीं आता है. ठीक है, लेकिन हमें कम से कम थियोरेटिकल है, हाफ पेज वो आना जरूरी है. An ultrasonic jet plane is moving towards an observer who notes its color to be orange. The true color of the plane is likely to be. मैं आपको ऑप्शन देता हूं, उसमें से बता दिया. रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू. एक ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये ऑरेंज है प्लेन, और ये किस तरफ आ रहा है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है. टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है मतलब उसको कौन से वाला शिफ्ट महसूस हुआ? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर में ब्लू शिफ्ट उसको ऑब्जर्व हुआ. यानी कि जो कलर है वो रेड की तरफ हकीकत में होना चाहिए. अब उसको ऑरेंज दिख रहा है, तो रियल कलर क्या हो सकता है? रेड हो सकता है. ठीक है, मतलब हम गारंटी से नहीं कह सकते रेड है, कोई भी हो सकता है. तो हो सकता है थोड़ा रेडिश ऑरेंज हो, कुछ हो, लेकिन इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन दिए ताकि उनमें से चूज करना है. तो बाकी सब नहीं हो सकते बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ऑन दिस साइड, राइट? सो दीज आर डेफिनेटली नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई रेड इज द परफेक्टली करेक्ट आंसर. लेकिन अगर मैं आपको दो ऑप्शन इस साइड के दे देता, जैसे IR भी दे देता, इंफ्रारेड भी, तब ऑब्वियसली नोबडी कैन आंसर दैट क्वेश्चन. Okay. What is meant by coherent sources of light? Coherent source का क्या मतलब होता है? ये इंटरफेरेंस वाला जो हम सेक्शन करेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना. सोर्सेज जिनसे भी वेव निकले उनकी फेज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी बराबर हो. वेरी गुड सोनाली. सो उसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो वेव्स आ रहे हैं किसी भी सोर्स में से, मान लीजिए ये एक वेव आया और दूसरा वेव ये आ रहा है उस सोर्स में से, ठीक है ना, और इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो ये है, तो वो यही रहना चाहिए हमेशा. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम उसे कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, वरना इनकोहेरेंट बोलते हैं. ओके. Can interference be observed if we use two sodium lamps separated by a small distance? तो इंटरफेरेंस आपको पता है, राइट? एटलीस्ट यू नो द बेसिक आइडिया. ये हमारा टू स्लिट्स हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. ओके. अब हमने क्या किया है, यहां पे मैंने सेपरेशन लगा दिया और ठीक है, दो सोडियम लैंप लगा दिए, तो क्या यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा? इस वाले स्लिट में से इस सोडियम लैंप से लाइट आ रही है, इस स्लिट में इस सोडियम लैंप से लाइट आ रही है. व्हाट डू यू थिंक? तब बनेगा. हाँ, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा. ओके, नहीं बन पाएगा. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये दोनों अलग अलग सोर्सेज हैं लाइट की,
तो ये सोडियम लैंप से जो लाइट जनरेट होती है वो रैंडमली जनरेट होती है, ठीक है ना। कभी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वहां से वेव आती है छोटी सी, फिर कहीं और से कोई आती है, राइट। तो क्या होता है, इस वजह से ये दोनों इनकोहेरेंट हैं। These are non-coherent sources, they are incoherent. इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट नहीं होगा, क्योंकि एक पल तो वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ, एक पल वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो एवरेज जो होगा क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म लाइट दिखाई देगी ऑन एन एवरेज, और हमें जो वो पटिया दिखाई देनी चाहिए इंटरफेरेंस की, जो बैंड्स दिखाई देने चाहिए, वो नहीं दिखाई देंगे इस केस में। सर ये कोहेरेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए वो बाय नेचर कोहेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? लाइट कैसे जनरेट होती है? इसको हीट कर रहे हैं फिलामेंट को, राइट। हीट करने से क्या होता है कि जो हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर एटम्स होते हैं, राइट। उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे, वापस डी एक्साइट होंगे, तो वहां से कोई वेव जनरेट होगी। ये किसी नैनो सेकंड पे जनरेट हुई, इसके साथ वाले एटम से किसी और नैनो सेकंड में जनरेट हुई। वो रैंडम प्रोसेस है बिल्कुल। तो इनके बीच में जो कोई भी कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, वो रैंडमली चेंज होता रहता है। और क्योंकि वो रैंडमली चेंज होता रहता है, इसलिए वो नॉन कोहेरेंट है, राइट। कोहेरेंस का मतलब कि कभी भी उनके बीच का फेज चेंज ना हो। फेज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो है वो हमेशा रहे। ओके, तो इस केस में इंटरफेरेंस नहीं होगा। अच्छा, यंग ने फिर क्या किया? यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया सो लॉन्ग बैक। ओके, हाउ डिड यंग overcome this problem? What did he do was he used a single sodium lamp. Okay, he put a small slit in front of it, a pinhole, not even a slit, a pinhole. Okay, and on the axis of the pinhole, like this, he put the two slits. Okay, now what happens that the light comes, a single wave comes here, that wave generates wavelets. These wavelets here generate the secondary wavelets. Okay, now there might be a phase difference between this point and this point, but they are coming from precisely the same point source. So this phase difference will remain constant. Randomly change होगा तो दोनों का randomly एक साथ change होगा, because he is using the same point source. This is the arrangement that Young used in the Young's double slit experiment. Okay, he did not use the two sodium lamps. ठीक है ना। ये आपको जब अगर यंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। यू शुड शो that there is a point source created from one sodium lamp and then there are two slits. Okay, what is meant by superposition principle in reference to addition of waves? सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है? ये हम हर एक, मेरे ख्याल से हर एक चैप्टर में ये टर्म आई है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसका क्या मतलब होता है? आपको वेव्स के रेस्पेक्ट में बताना है।